Hello students, welcome you all to the channel of EduVentures Learning. Here we discuss about all the chapters that are included in your board syllabus. We talk about the chapters that are in English, Maths, Physics, Chemistry and Biology. Today in this video we will be talking about the reproductive health. This topic comes under the chapter 8 of NCERT book Biology, that is reproduction. So what is reproductive health? What are the issues that we should take care of during the sexual intercourse, and the things which are very much important to be taken care of. So starting with reproductive health. What is reproductive health? As you know, reproduction, what is reproduction? And reproductive is another adjective added to it. Reproductive health. STD एक वर्ड है, एक टर्म है जो हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है sexually transmitted diseases. The word itself explains everything coming under this. Sexually, we have already talked about it. What are sexual and asexual things? Transmitted मतलब carry forward करना from one body organ to different body organ, और ये diseases किसी भी body में newly होना. And the third is diseases, कोई भी disease. We know what are diseases and what are infections. So the full form of STD, that is sexually transmitted diseases. There are many infectious diseases which are spread by sexual contact called sexually transmitted diseases. For example, AIDS and hepatitis. ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, डिसीजेस हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से इंक्रीज होती हैं या फिर हमारे बॉडी में अकर करती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. एड्स इज़ अ वेरी फेमस नेम अंडर दिस टॉपिक. इसमें बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सुना है, बिकॉज इन आर रेगुलर डेज भी हम लोग सुनते हैं एड्स के बारे में. बहुत सारे ऐसे प्रिकॉटिव मेजर्स हैं जो हमें लोगों के द्वारा बताई जाती है. प्लस इससे रिलेटेड थिंग्स बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हर जगह पे हमें पढ़ने को मिलती हैं. एंड द सेकेंड इज हेपेटाइटिस. STDs occur mostly in the individuals who are involved in sexual activities with many partners. STDs mainly उन लोगों को होती है जो इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं और बहुत सारे लोगों के साथ सेक्सुअली एक्टिव हैं, या फिर ऐसे लोग जो लोग बहुत सारी सेक्सुअल एक्टिविटीज डिफरेंट पीपल के साथ करते हैं. इफ यू आर कनेक्टेड विथ वन पर्सन ओनली, ऑफ कोर्स सेक्सुअली, then this problem may occur very, like, chances of occurring this problem is very low. But if you are in contact with many partners, then there is chances of happening STDs if you don't take proper precautions. If you are not taking any precaution before getting sexually intimated with anyone, it can happen to you as well. So coming to the next, some common sexually transmitted disease. ऐसे कौन से diseases हैं जो बहुत common है जो sexually transmit हो सकती हैं? That is number 1, AIDS. यहाँ पे हम लोग 3 things देख रहे हैं. नेम ऑफ STD, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, उसमें कौन सी चीज़ आती है हमारे बॉडी में और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं. तो नंबर 1 सबसे पहले हमने एड्स को लिया है, जिसके बारे में मैं ऊपर आपसे बात कर रही थी. एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये होता है HIV की वजह से, एक HIV नाम का वायरस जो जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. HIV इज अ वायरस जो हमारे बॉडी में बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकते हैं, लेकिन इसका मेन रीजन जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट ही होता है. इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस ड्यूरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग और गेटिंग क्लोज विद समवन, दिस कैन हैपन टू यू. इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? नंबर 1 symptom is destroy the immune system of the body. AIDS destroy the immune system of your body. Immune system, you must be hearing, this is corona days right now, so you must be hearing about what is immune system, how to make your immune system more stronger by drinking so much of kadha and all. So immune system, the word immune system is very much
पॉपुलर दीज डेज। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। हम लोगों को बहुत जल्दी बहुत सारे डिसीजेस का सामना करना पड़ सकता है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एड्स। नंबर 2 इज परसिस्टेंट कफ एंड फीवर। हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा क्योंकि इम्यून सिस्टम नहीं है, हमारा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है इम्यून सिस्टम एड्स की वजह से, तो इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा होती है कि हमें कफ और फीवर हमेशा ही रहता है। छोटे छोटे इन्फेक्शंस की वजह से, छोटे छोटे डर्ट और पॉल्यूशन की वजह से भी हमें कफ एंड फीवर का सिम्टम्स नजर आने लगता है। बॉडी अटैक्ड बाय अदर डिसीजेस लाइक निमोनिया, टीबी एंड सर्टेन कैंसर्स। एड्स होने के बाद क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, तो हमारा बॉडी में और भी बहुत सारे ऐसी डिसीजेस हैं जो अटैक कर देती हैं, जिसमें से कुछ सिमिलर डिसीजेस होती हैं निमोनिया, टीबी एंड सर्टेन कैंसर्स। एज यू नो कैंसर्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो एड्स के पेशेंट में नॉर्मली हो जाते हैं। जिन लोगों को आपने सुना होगा कि अगर आप हेल्दी हो तो आप बहुत लंबे टाइम तक हेल्दी हो, पर अगर आपको कोई डिसीज एक बार हो जाता है, सपोज आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या आपको डायबिटीज हो जाती है या आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्योंकि बिल्कुल ही वीक हो जाता है धीरे 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 विद एज, और इफ वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। एंड विद दैट हमारे बॉडी में बहुत सारी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट जितने हमारा बॉडी जिन चीज़ों को नहीं अब्जॉर्ब कर पाता है, वो हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर देती हैं, जिनको हम लोग नॉर्मली अलग अलग डिसीजेस के नाम से जानते हैं। नंबर 2 इज सिफिल्स। ये भी एक डिसीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही होता है। ये होता है बैक्टीरियम की वजह से, जैसे हमने पढ़ा था एड्स होता है वायरस की वजह से, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉज सोर एंड लेजन्स इन द जेनिटल ट्रैक्ट। क्या करता है ये? सोर्स लाता है, लाइक खराश टाइप्स की, एंड lesions in the genital tract. And number 2, burning sensation at the urination. When you will go for urination or to pee, you will feel the burning sensations in that part, in the male reproductive part or the female reproductive part. जो भी ये जो बीमारियां हैं, ये जो डिसीजेस हैं, STDs हैं, वो मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं, और ये सिम्टम्स भी मेल और फीमेल दोनों में नजर आ सकते हैं। इसलिए ये जितने भी हम लोग अभी यहाँ पे सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, ये सिम्टम्स भी वैसे ही हैं, मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं। तो ये जो बर्निंग सेंसेशन एट द यूरिनेशन है, दैट कैन ऑल्सो हैपन इन बोथ द male and female living organisms. Number 3 is gonorrhea. Neisseria gonorrhea नाम का भी एक बैक्टीरियम है, ये भी बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है। गोनोरिया, इसमें क्या क्या होते हैं? इन्फेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में मतलब यूरिन के ही प्लेस में म्यूकस मेम्ब्रेन्स को इन्फेक्ट करता है। एंड नंबर 2 जेनिटल डिस्चार्ज, पेनफुल यूरिनेशन। जेनिटल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं, और पेनफुल यूरिनेशन। ड्यूरिंग द पी यू विल फील द पेन, ठीक है। जैसे यहाँ पे सीफिल्स में बर्निंग सेंसेशंस आ रहे थे यूरिनेशन के टाइम पे, वैसे ही यहाँ पे पेनफुल होगा यूरिनेशन के टाइम पे। नंबर 4 इज ट्रिकोमोनाइसिस। ट्रिकोमोनाज वेजिनालिस, दैट इज अ प्रोटोजोअन। ये जो डिसीज है ये भी सेक्सुअली इंटीमेटेड ही है, ट्रांसमिटेड ही है, लेकिन ये एक प्रोटोजोअन की वजह से होता है। देखिए हमने यहाँ पे वायरस से होने वाली भी पढ़ ली, बैक्टीरिया से होने वाली भी पढ़ ली, एंड नाउ कमिंग टू प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन से होता है ट्रिकोमोनस वेजिनालिस, ये एक प्रोटोजोअन का नाम है, जिससे डिसीज होती है हमें ट्रिकोमोनियासिस। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? वजाइनल इरिटेशन, इचिंग एंड डिस्चार्ज। दिस कैन हैपन मोस्टली इन फीमेल्स ओनली। इससे क्या होता है? वजाइनल इरिटेशन होती है, you will not feel comfortable over there, itching होती है, एंड बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होती है। तो these are the 4 mainly considered or mainly known or commonly known diseases that happens because of the sexual transmission of
diseases or organisms. Okay, if we are not taking proper care of our bodies during coming in the sexual intercourse with anyone, try not to be with in relation with so many of people. The chances of getting these diseases increases with the number of people you are in contact with. Now, what are the methods of prevention of STDs? अब of course diseases हैं तो prevention is always better than cure. तो preventions क्या क्या हैं in STDs से बचने के? If we are, suppose if we are in relationship with so many of people and we are getting close with so many of people, so what are the methods that we can take, or what are the preventions or precautions that we can take to not get STDs in our body? That is, the people should be educated about the various STDs. The reason why this chapter and why this topic is included in your book is this only. It is very important for everyone to know about these things, ताकि हम लोग गलती करने के पहले हमें पता रहे कि उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं. अगर हमें पता है कि उसके रिजल्ट्स इतने ख़राब हैं, हमें इस तरह की डिसीजेज हो सकती हैं जो हमारे पूरे लाइफ को, पूरे बॉडी को ख़त्म कर सकती हैं, तो हम उन लोगों से, उन चीज़ों से दूर रहेंगे, बच के रहेंगे, प्रिकॉशंस लेके रहेंगे. लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी है कि हमें उसके बारे में पता हो. अगर हमें बीमारी के बारे में पता है, उसके सिम्टम्स के बारे में पता है, तो डर से हो या फिर प्रिकॉटिव मेजर में हो, लेकिन हम लोग केयरफुल रहेंगे. तो इसीलिए उसका जानकारी होना, उसके बारे में एडुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Number 2 is extramarital relation should be avoided. As I said before, if you are in relation with so many of people, it is most of the chances, like it is almost 90% of the chances, if you're not taking proper precautions, you will get these STDs. So being in relation, sexual relation with one person is enough for a person, and it should be avoided. If you are, or if anyone is, then should avoid it. Number 3, no sex without proper precautions. We should not get close to anyone or sexually intimate to anyone without having proper precautions. Number 4, high standard of moral education should be given to the people. High standard of moral education इसलिए क्योंकि the people who are not talking about these topics so openly, we have a boon over all these things. We don't take it like we don't take these topics in a family member or talking with all of us. It is not comfortable for us. So high standard of moral education is very important. Not everyone is comfortable and eager to talk to you about all these things, but getting the knowledge of everything related to your body at this age, where you are, like all of you, the one who is studying in standard 10, they are at their puberty age. They must be feeling so much of things inside their body, and physically, mentally, emotionally, everything. They are changing everything in their life. So many of hormones are working inside your body, so it is very much important for you to know everything. If you are not able to discuss these things in your family, then your school, then your other teachers, like me, बहुत सारे लोग हैं ऐसे who can teach you about these things. You should get that. High standard of moral education is very important these days. Now, next topic is methods adopted for population control. Okay, fine. Like you went through the things which you should not have, but if something wrong has happened in that case, what are the methods, what are the precautions, what are the things that you can take or give to the other members which will help them to control it. So these are some things which our scientists, great scientists have discovered, जो हमारी गलतियों को control कर सकते हैं और unwanted things को control कर सकते हैं. तो that is number 1, contraceptives. Contraceptive devices that prevent unwanted pregnancy and help avoid STDs. ऐसे कुछ devices हैं जो कि STDs को होने से रोक सकते हैं, वो diseases को होने रोक सकते हैं, साथ ही pregnancy में भी control कर सकते हैं. Contraceptives can be various types such as mechanical barriers, कुछ ऐसे
चीज़ें जो बैरियर्स का काम करें, हार्मोनल और केमिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। केमिकल बैरियर्स हो सकते हैं, मैकेनिकल बैरियर्स हो सकते हैं, सर्जिकल मेथड्स भी हो सकते हैं। इफ द कंडीशन गेट्स वर्स्ट विद टाइम और विथ नो केयर ऑफ योर्स, तो सर्जिकल मेथड्स भी हैं. So the most prioritized thing that everyone in India is considering, not in India but all over the world, and the government is also talking about these things very commonly in news channels and everything. These are coming. You must have noticed it. As I said, it is your puberty age, so you must be knowing it. Condoms, one of the most effective methods of contraception. A mechanical barrier, it is a mechanical barrier, remember. A mechanical barrier that stops the semen from entering the female tract, preventing pregnancy. So this is a mechanical barrier which stops the male semen, it stops the male gamete to enter into the female gamete. Okay, it also avoids the possibility of contracting STDs. ये एक बहुत इफेक्टिव पॉसिबिलिटी होती है इसमें कि ये एसटीडी से भी हमें प्रिवेंट करवा सकता है, नॉट ओनली बर्थ कंट्रोल बट एसटीडी कंट्रोल एज वेल. नंबर 2 इज डायफ्रागम्स. डायफ्रागम्स आर बैरियर्स, ये भी बैरियर्स हैं दैट कैन बी एडेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स. ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, लाइक इस टाइप का कुछ होता है विच गेट इन दिस येलो वन. ठीक है, इन द पिक्चर यू कैन सी क्लियरली दिस येलो वन इज डायफ्रागम, दिस इज यूटरस. ठीक है, यहीं पे होता है हमारा जो pregnancy or fertilization का process है. I have discussed this topic in the previous video. You can just go through that video if you don't know what are the functions of uterus and ovaries in the female body. You can go there and watch that video. So here the diaphragm controls birth or the chances of getting STD by becoming a barrier. बैरियर किस तरह से बनता है, ये यूटरस के सामने यहाँ पे डॉक्टर्स फिक्स कर देते हैं डायफ्रागम को, जिसकी वजह से इफ द semen is coming from here, so it will not reach the uterus, it will not get, the eggs will not get fertilized, so the chances of pregnancy will get lower or the chances of getting STD will almost get demolished. Number 3 is emergency pills. Emergency pills are those pills which can be taken after coitus to avoid pregnancy. तो emergency pills कुछ ऐसे pills हैं, for example if you are not taking proper care while getting intimated, then these medicines can be taken for preventing the pregnancy things. They quickly change the level of hormones. ये जो चीज़ है, ये जो medicines होते हैं, इनको इस तरह से इन chemicals से design किया गया है कि वो आपकी body में hormones का level change कर देते हैं and prevent a successful implantation even if the egg gets fertilized. अगर eggs fertilized हो भी जाते हैं, like if the semen has already reached the female gamete, then also it can do a successful implantation. ठीक है. Next is IUD. IUD stands for intrauterine device. ये एक ऐसा intrauterine device है, इसका full form है intrauterine, intrauterine. इसको अगर हम लोग break करें, that is intrauterine device. They can be used for a couple of years. इसको एक बार अगर body में fix कर दिया जाए तो that can be used for years. It can be maximally used for 5 years. After that you need to change it medically. It is a device that is inserted into the uterus. ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूटरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, चेंजिंग इट्स शेप एंड प्रिवेंटिंग सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट. इसलिए प्लेस किया जाता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके, जाइगोट बनने से रुक सके. Sterilization, the last step, the last method that can be taken to avoid the STD or the chances of pregnancy, that is sterilization, is a surgical method. Sterilization is a surgical method of going permanently sterile. Permanently sterile हो जाते हैं लोग. This can be done in both males and females.
Sterile का मतलब they will not be able to produce kids after that. If you are getting a surgery, you will not be able to produce kids after that. So permanently sterile हो जाते हैं. It can happen in both male and female. This can be done in both males and females. In males, it is called vasectomy. अगर मेल्स में होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग वैसेक्टोमी. सर्जरी है, इट्स अ सर्जरी. ऑपरेशन करके इन मेल्स के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें की जाती है जिनसे उनका सीमेन प्रोडक्शन या तो बंद हो जाता है या तो फीमेल के अंदर इंसर्ट नहीं कर पाता. एंड फीमेल्स इट इज कॉल्ड ट्यूबल लिगेशन. ये भी सर्जरी है. अगर मेल्स में हो तो वैसेक्टोमी बोलते हैं, फीमेल्स में हो तो ट्यूबल लिगेशन बोलते हैं. बट इट्स अ सर्जिकल मेथड which make the person goes permanently sterile. They will not be able to get pregnant after that. So these are the all. We have already talked about what is reproduction, fertilization, how the male and female gametes get fused and produce new baby young ones. These are the precautive measures which we need to study about before doing anything, or taking care of our health and our partner's health is very much important. So these things we should consider, we should learn these things. If you are not comfortable talking about all these things in your family or with your friends, you can surely go to your teachers and ask them, or you can comment down the things which you are facing problems in these subjects and these topics. I will surely make your doubts get cleared. And thank you for watching.